Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read the earlier chapter उसमें जितने भी exercise part थे आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new chapter, that is chapter 2. The chapter name is sense organs. Let's start the chapter. There are some specific organs which tells us about the things happening in our surroundings. The organs that help us to know the outside world are called sense organs. Eye, nose, ear, skin and tongue are the 5 sense organs. अब यहाँ पर बोले कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो बताते हैं हमें क्या चीज़ें हो रही है हमारे आसपास उसके बारे में, और जो हमें आसपास की चीज़ों के बारे में बताते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं. सेंस ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें, आईज है, नोज है, ईयर्स है, स्किन है और टंग है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंस ऑफ टच. Without feeling, we cannot be aware about the texture of things. To feel things, we need to touch them. The sense organ used to feel things is the skin. There are many nerves in our body. These nerves send the signal from the skin to the brain. Every time we touch a particular thing, the signal is sent from the skin to the brain through nerves. This information is processed by the brain and it tells what we are touching. अब यहाँ पर सेंस ऑफ टच की बात की गई है, यानी कि बिना फीलिंग के वी कैन नॉट बी अवेयर, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, अबाउट द टेक्सचर ऑफ द थिंग, कि उस चीज का कैसा टेक्सचर है, सॉफ्ट है या हार्ड है. ओके, ताकि मतलब हम चीजों को फील करें हमें क्या चाहिए, वी नीड टू टच दैम, हमें उन्हें टच करना पड़ेगा. ओके, तो ये जो सेंस ऑर्गन है जिससे हम फील करते हैं चीज़ों को, उसे हम स्किन बोलते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है. देयर आर मेनी नर्व्स, इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अटैच होते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, किसको मैसेज पहुँचाते हैं, ब्रेन को मैसेज पहुँचाते हैं. ओके, जब भी हम कोई चीज़ को छूते हैं तो एक सिग्नल जो है वो स्किन से कहाँ जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है, थ्रू द नर्व्स वो ब्रेन की तरफ जाता है. ये इन्फॉर्मेशन फिर प्रोसेस होता है ब्रेन में एंड फिर बताता है ये हमें कि वेदर टू टच दैट ऑब्जेक्ट और नॉट. Our sense of touch let us know whether an object is cold or hot, rough or smooth, soft or hard and dry or wet. हमारा जो sense of touch है वो बताता है कि क्या जो object है वो ठंडा है या गर्म है, rough है या smooth है, soft है या hard है या फिर dry है या wet है. We should not touch all the things that we see in our surroundings. Some can be hot and our skin may burn, or some can injure or hurt us. Below given things should not be touched by us. They might prove to be hazardous for us. So यहाँ पर बोला है कि हमें हर एक चीज़ को नहीं छूना चाहिए. जैसे कि कोई गर्म ऑब्जेक्ट होता है हमें नहीं छूना चाहिए क्योंकि वो हमारा जो हाथ है वो जल सकता है, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट को भी हमें नहीं छूना चाहिए, हमें चोट लग सकती है. तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रखी है जिन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए, जैसे कि हॉट यूटेंसिल्स हो गया, डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए, सीजर हो गया, ओके, नाइफ हो गया, कैक्टस हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड टच एंड बैड टच. All of us like to be touched by our parents and close relatives. Such a touch by which we feel loved is known as good touch. हम सभी बच्चों को पसंद है, जैसे आप सभी बच्चों को पसंद है कि आपके पेरेंट्स आपको टच करते हैं तो आपको वो प्यार से टच करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको प्यार से टच करते हैं, जैसे गालों में टच कर दिया या सर में या फिर पीठ थपथपाना, तो ये गुड टच होता है. ओके, Sometimes we do not feel good when we are touched by any stranger. Whenever we feel uncomfortable by the touch of anyone, we should immediately stop them from doing so and inform our parents or teacher about it. This kind of unfriendly touch which make us uncomfortable is called a bad touch. कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्ट्रेंजर्स जो होते हैं हमारे बॉडी पार्ट को गलत तरीके से टच करते हैं, गलत जगह में टच करते हैं, तो उनको हम बैड टच बोलते हैं. और ये इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे मतलब आपको बैड टच कर रहा है, तो आपको किसको बताना है, पेरेंट्स को बताना है या फिर टीचर्स को बताना है. ओके, सो ये जो अनफ्रेंडली टाइप ऑफ टच होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बैड टच बोलते हैं. Now before going further, there is an activity, match sense organs known with their function. आपको मैच करना है सेंस ऑर्गन को उसके फंक्शन के साथ. Now there is another point, that is, do you know blood pressure and heart rate can be reduced by a touch. ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को हम टच से रिड्यूस कर सकते हैं, जो अच्छा वाला टच है, गुड टच, उससे रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सेंस ऑफ स्मेल. We smell everything using our nose. Nose has some special cells which are called receptors. Whenever we smell something, the receptors carry a signal to the brain, which in turn let us know about the smell is what the smell is all about.
In this way, the nose helps us in smelling the fragrance of flowers, the mouth-watering aroma of freshly baked cakes, and the unpleasant odor of rotten vegetables and dirty shoes. अब यहाँ पर बोला है कि हम स्मेल करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो अब किसकी मदद से स्मेल करते हैं, हम नोज़ की मदद से स्मेल करते हैं। नोज़ में कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो रिसीव करते हैं एंड देन वो सिग्नल कहाँ पर पहुँचाते हैं, ब्रेन में पहुँचाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ को स्मेल करते हैं तो वो जो रिसेप्टर्स है वो ब्रेन में सिग्नल पहुँचाता है, फिर ब्रेन बताता है अच्छा ये वाली चीज़ की स्मेल है, ये वाली चीज़ की स्मेल है। ओके, सो इन दिस वे ये जो नोज़ है ये मदद करता है हमें बताने के लिए कि अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, कि कैसा फ्रेग्रेंस है फ्लावर्स का, या फिर माउथ वाटरिंग अरोमा जो हमें पता चल जाता है कि अच्छा अब ये बन गया, फ्रेशली बेक केक जो है ये बन चुका है, एंड द अनप्लेजेंट ऑर्डर जो हमें अच्छी नहीं लगती स्मेल उसके बारे में बता देता है। ओके, अबाउट द दैट रोटन वेजिटेबल जो सड़ी हुई सब्जियां हो गई या फिर जो डर्टी शूज हो गए उनकी स्मेल अलग से ही आ जाती है। Now before going further there is an activity, observe each picture, circle the things that you can touch. आपको हर एक पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और उन पिक्चर पे आपको सर्कल करना है जो आप टच कर सकते हो। ओके, now the next point is differently abled or special people. Certain people cannot hear while some cannot see or speak. Such people are called differently abled or special people. People who do not have a particular sense organ, their other organ becomes highly developed. For example, an individual who has lost the power of hearing or sense of sight develops a strong sense of smell or touch. People who are blind are given opportunity to use their fingers to touch and read the braille script. अब यहाँ पर बोला है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं या फिर बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पीपल बोलते हैं। एंड ये जो है इनका हु डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर, मतलब उनका एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता है, पर उनके जो दूसरे सेंस ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रांगली काम करता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड पीपल हु आर ब्लाइंड, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने फिंगर्स से टच कर सकते हैं चीज़ों को एंड वो रीड कर सकते हैं किसको, ब्रेल स्क्रिप्ट को। Here you can see the special people. Now as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one is nerves, the messenger of the body from the skin to the brain. Next one is bad touch, the touch that makes us uncomfortable. Next one is receptors, special cells that carry signals from the nerves to the brain. Next one is fragrance, pleasant smell. Next one is aroma, a strong pleasant smell generally from food or drink. Now the next point is things to remember. First one, sense organ help in becoming aware of the whole world around us. Nerves act as a messenger between the skin and the brain and inform the brain about the touch to a body. Next one, some things should not be touched because they can be detrimental to us. Next one, the touch that does not make us feel comfortable is termed as bad touch. Next one, the nose helps us to smell things. There are certain special cells called receptors in the nose that transmit the signal from the nose to the brain. Next one, the people who are unable to see, hear or speak etc. are called the differently abled people. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जोन में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको एक्सरसाइजेस उसे कंप्लीट करना है। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।